Welcome to Next IAS. Today we are going to talk about UPSC prelims notification. G. Yesterday itself the notification was out and there are certain changes which are introduced. We have to understand these changes and there are certain important features which you have to understand because it has been observed in past कि students make small mistakes, error and later they are in trouble. तो शुरू से ही इन सारी परेशानियों को, इन बारीकियों को समझ लेते हैं और इस बार के फॉर्म में ऐसा क्या है डिफरेंट विच वाज नॉट देयर इन द लास्ट ईयर, ऐसा भी है। जी हाँ, हमें आज समझना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ just giving the brief idea, this year in 2024, notification of 2024, there are 1056 vacancies and mode of filling the form as usual is online, and there are two parts of the filling online form. One part is called one-time registration, this is OTR, and second is the online application form. वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एज या जो आपके जो फादर्स नेम एंड सो ऑन, ये आपके परमानेंट होगी, तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको भरना है। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट इज फॉर द सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन फॉर्म विच इज कॉल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने ये ऑलरेडी फिल कर रखी है, बिकॉज एनी टाइम इन ए ईयर फर्स्ट पार्ट कैन बी फिल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, बट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज विल बी डिफरेंट देन फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विस एंड सो ऑन। तो ये पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव नॉट फिल्ड पार्ट 1 येट, तो आपको दोनों पार्ट फिल करने पड़ेंगे। The last date to apply is 5th of March and this time to be noted, this is 6 p.m. 6 p.m. is the time to be noted on the last date. So from today, that is from yesterday itself, the form is open 14th of February to 5th of March. So from 14th February to 5th of March, this is the window which is given for the filling application form. Now coming, the allotment of center, whichever you will prefer, will be on the basis of first apply and first allotted. The UPSC will follow this policy. The fee is 100 rupees and this fee is waived off for the female candidates, so a scheduled caste candidate, ST candidates and PWD candidates. This is 100 rupees for the other candidates. Eligibility means degree of graduation and this degree of graduation is required during the mains examination, not now. तो दोस्तों आपको अभी नहीं चाहिए, this degree will be required during the main examination. Here we are talking about the DEF 1. What is the meaning of DEF 1? कि जो फॉर्म आप अभी भरेंगे that is for prelims. If you get selected in prelims means you are qualified in prelims, then you will fill a form which is called detailed application form number 1. So during this time you have to submit the copy of the degree. इसका मतलब ये हुआ, if you are in final year you can apply for this examination. Your result must be declared before the appearing in mains examination. और mains में कब appear होना पड़ेगा? That form will be somewhere in the July, August. So during that period your degree must be available. Now coming further, for the general and EWS category, the age criteria is 21 to 32 years, right? And this age is counted from 1st of August. Yes, please notice this is counted from 1st of August. It means you should be born between 2nd August 1992 to 1st August 2003. इस डेट के बीच में कहीं ना कहीं आपका बर्थ होना चाहिए if you are a general category or EWS category. If you are an OBC candidate or a defense personnel candidate, तो फिर आपको 3 year relaxation है, that is in upper age but not in lower age. For SC/ST candidates, there is 5 years relaxation, so this becomes 37 year upper age. And for the PWD, physically persons with disability, there will be upper age limit of
42 years. So the lower age limit is same for all, 21, but upper age limit depends on the category. Now moving further, we talk about the number of attempts. So number of attempts for the general and EWS category are 6. For OBC and PWD category, number of attempts are 9, whereas for SC and ST category, number of attempts are open. Means you can write if you are eligible with respect to age. तो यहाँ पर limit नहीं है. But what is the meaning of attempt? Attempt does not mean if you have filled form, your attempt is wasted. No. Attempt means when you appear in the examination. If you have appeared even in one paper, your attempt is counted. So if it is prelims, you have appeared in prelims either in one or both the papers, then your attempt is counted. But if you have just filled form and you have not attempted the paper, then your attempt will not be wasted, will not be counted. So that is one thing to understand. इस बार इन्होंने जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज as you know 5th of March evening 6 p.m. and after that they are providing 1 week window from 6th to 12th March to make any amendment if you have realized after submission of form that कुछ गलती हो गई. If something is left or error or any mistake, तो 1 week का window है, you can make correction, but this will be one time. और 1 week के अंदर ही correction कर सकते हैं. And this is only one time correction can be done. Change of category, ये important point note करने वाला है कि change of category will not be permitted. It means if you have opted for the general category in the prelims, then it will remain same in mains, same in interview. And if you have opted for any reserve category, let us say you have opted for the OBC, then it will remain same. It will not be changed. Except in special case. What is this meaning of a special case? I would like to explain here. Category will not be changed except in a special case. It means if you are reserve category candidate, let us say EWS or OBC, but you could not give proof or valid document and you have reached till interview and your document is found invalid or your certificate is not as per format or some discrepancy, then you may be treated in general provided you have cleared cutoff of each stage, that is prelims, mains and interview with cutoff of general. अगर आपने जनरल से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं हर स्टेज में, तो आप जनरल कंसीडर किए जा सकते हैं इन स्पाइट कि आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनिशियली फिल किया था लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, इसलिए आपको जनरल में कंसीडर किया जा सकता है. बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होगा कि आपने पहले जनरल भरा था, बाद में आप बोले कि मेरा कट ऑफ कम आ रहा है तो आप मुझे ओबीसी में कंसीडर कर लीजिए या एससी में. ऐसा नहीं होगा. इट मींस फिलिंग द कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको बहुत सोच समझ के फिल करिए. कीप ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स विद यू. यहां पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले सालों में हमने नोटिस किया है देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैव फेस्ड डिफिकल्टी और उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है बिकॉज दे कुड नॉट प्रोड्यूस द वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ द रिजर्वेशन. तो वो आपको ध्यान रखना है कि कब डॉक्यूमेंट वो बना होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, किस ऑफिसर के थ्रू वो बना होना चाहिए, मतलब हु विल बी द ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू इश्यू द सर्टिफिकेट. तो ये भी हमें समझना और उसका फॉर्मेट क्या है, दैट वी विल टॉक अबाउट. लेकिन इस बार के फॉर्म में कुछ नई चीजें भी है और उन नई चीजों के बारे में भी अभी हम बात करेंगे. और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, दोज डॉक्यूमेंट्स, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. So first is proof of age you will be required, and the proof of age will be through the class 10th or equivalent certificate. So matriculation or equivalent certificate
you have to give, that is the proof of age. Then proof of graduation, that is your degree certificate, and this degree certificate you will be required to produce at the time of the filling detailed application form 1. DAF 1 कब भरते हैं? मेंस के पहले. और DAF 2 कब भरते हैं? इंटरव्यू के पहले. मीन्स आफ्टर क्वालिफाइंग द मेंस फाइनल स्टेज में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 भी भरना पड़ेगा, जिसमें आप कैडर प्रेफरेंस, सर्विस प्रेफरेंस वगैरह भरेंगे. एंड देन आइडेंटिटी प्रूफ यू हैव टू गिव, दैट में बी आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या और भी कोई एनी गवर्नमेंट or any government ID card which has been given by the state government or the center government. So ID card. Photograph. This photograph should be of size between 20 to 300 KB. JPEG आपको अपलोड करना पड़ेगा. बट यहां पर कुछ कैच है. दिस इज इंपॉर्टेंट. वी विल टॉक अबाउट दिस की फर्स्ट टाइम there are certain instructions related to the photograph. This we will talk about. Right. The photograph should have this, and then you have to give the scanned signature also. तो एक scanned signature, आपकी जो signature है उसके वो scan करके upload करना होगा. Email ID, a valid email ID which is active and you keep on checking time to time, क्योंकि आपका सारा correspondence electronic होगा. Next is you have to give your phone number which is always active. Sometime UPSC may contact you if under emergency conditions. Economically weaker section, OBC, SC, ST, PWD, these are reserved categories, so you have to give this certificate, but this is only for reserved category students. General category students are not required this. तो क्या documents चाहिए? Age के support में class 10 certificate, then degree, then ID proof, and then photograph up to be uploaded, scanned signature, email ID, valid email ID, phone number and reservation category support document. अब ये important है, this is important which we will talk about, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे cases हुए हैं. Last year we have seen the case of the All India rank 105. She was in EWS category, but by mistake or unknowingly या फिर because of lack of information, she uploaded old document of reservation, that is old certificate, and which was not valid. Even though after result she moved to the court and Supreme Court also didn't consider. तो इसलिए इस तरह की mistakes ना हो, ये आपको समझना है कि इस तरह की mistakes ना हो. Right, this we will have to discuss. Then अगर in case you are working in any government department or in public sector department, then you will be required to sign an undertaking. An undertaking is that you have informed to your department or HOD of the department that you are applying or appearing in UPSC. तो ये एक undertaking देनी होगी आपको. कोई NOC नहीं चाहिए. There is no need of NOC. UPSC doesn't want that you should produce NOC from your department. No. But UPSC will say you have to give an undertaking that you have informed to your department. Then certificates are needed at stage 2. Stage 2 is when you will qualify prelims. उस समय certificate देना पड़ेंगे. But all these things you have to procure timely. अपने पास रखना होगा. Especially the reservation certificate. I will talk about it. अब इस बार नया क्या है? What is new this time? ये भी जरा देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है upsconline.nic.in पर. It is not the same site like UPSC की जो मेन होम साइट है, that is upsc.gov.in, but application form available होता है upsconline.nic.in पर. This was last year also. One time registration आपको पहले करना है. This is first part, one time registration, and this is once in a lifetime. और कोई भी UPSC का एग्जाम होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी. राइट. देन इट कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर. दिस OTR कैन बी डन. अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर कर रखा है, यू आर रिपीटिंग दिस ईयर, अपीयरिंग अगेन, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी होगी. बट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट OTR कैन बी एडिटेड वंस. एक बार इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं. जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है उसके एक हफ्ते के अंदर आप OTR की इंफॉर्मेशन को भी अमेंड कर सकते हैं. चेंज इन OTR इज permitted only once, that is available till 7 days from the closing date of the examination.
ये इसलिए अलाउ होती है, जरूरत होती है अमेंडमेंट, कि हो सकता है लास्ट ईयर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा था, इस बार आप ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हैं, या लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस से भरा था, आपका जॉब लग गया, इस बार आप जनरल से भरना चाहते हैं, तो एक बार अमेंडमेंट इसमें अलाउड है, दैट इज डन। वंस सबमिटेड, एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विथड्रॉन। ये नया है इस बार, लास्ट ईयर तक एप्लीकेशन विथड्रॉ करने का ऑप्शन होता था, बट इस बार से एप्लीकेशन विथड्रॉ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट डजंट मीन ज्यादा से ज्यादा आपकी फीस ही वेस्ट जाएगी। अगर आप एग्जाम में नहीं अपियर होना चाहते हैं, अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो एग्जाम मत दीजिए। सो यू विल नॉट हैव एनी लॉस by this. This is just an information. Once form is submitted, its withdrawal cannot be done. Withdrawal cannot be done. Then online question paper representation portal will be also active. जब एग्जाम हो जाएगा, just after prelims, if you feel some of the questions or any of the question in the paper or in any of the two papers is having error, fault, mistake, and you want to bring in the notice of UPSC, then within 7 days from the date of examination, you can submit your query or your objection. So this is available and UPSC will allow you. हाँ, यूपीएससी की आंसर की नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन सेम है, कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस है, तो आप यूपीएससी की नोटिस में ला सकते हैं एंड यूपीएससी में कंसीडर इट। यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नोटिस। यूज ए रिसेंट फोटोग्राफ। क्या कह रहा है ये? शुड नॉट बी ओल्डर देन 10 days बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। It means this year you will not be able to use your old photograph. You have to use your recent photograph which is not older than 10 days before filling the form. तो अगर आप 10 दिन बाद फॉर्म भरने वाले हैं तो अगले 10 दिन के अंदर आप फोटोग्राफ खिंचवाइए। अगर आप लास्ट डे फॉर्म भरने वाले हैं तो उसके 10 दिन के अंदर आपको फोटोग्राफ खिंचवाना है। सो लेटेस्ट फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड। यू कैन नॉट यूज 1 month old or 1 year old photograph. This is important this time. This was not there in the past. Plus, photograph के नीचे you have to mention the name of candidate and also date of photograph taken. आपकी अगर फोटोग्राफ 20th February को ली गई है, then you have to mention 20th February 2024. This is the date of photograph and your name also has to be mentioned. So this is first time which is being made mandatory. तो ये आपको ध्यान रखना है कि this is photograph should be recent and name should be mentioned as well as your date of the photograph should be mentioned. और कुछ देखते हैं यहाँ पर, the face should occupy, देखिए जो फोटोग्राफ होगा in that the face should occupy 3/4 स्पेस इन द फोटोग्राफ। तो ऐसा नहीं कि आप नीचे तक फोटोग्राफ ले लें, मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ इज ऑफ योर फेस बिकॉज फेस आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई हैव शोन हियर फ्यू थिंग्स, प्लीज सी। दिस इज ऑल्सो ए न्यू इंस्ट्रक्शन दिस टाइम, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि दिस ईयर एप्लीकेशन फॉर्म इज डिफरेंट देन द लास्ट ईयर। कुछ तो डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है the candidates must ensure that their appearance must match with the photograph at the each stage of examination, that is at the time of prelims, at the time of mains, at the time of interview, right? इसका मतलब यह है कि अगर आप फोटोग्राफ में दाढ़ी रखे हुए हैं तो एग्जाम में जाते समय भी आपके पास दाढ़ी होनी चाहिए, चश्मा होना चाहिए अगर चश्मा लगा रखा है। अगर आप फोटोग्राफ में क्लीन शेव हैं या फिर बिना चश्मे के हैं तो एग्जाम में भी बिना चश्मे के जाना होगा। दूसरा, इस फोटोग्राफ के नीचे आपका नाम लिखा होगा और इसके नीचे आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा होगा। दिस नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, राइट? इफ यू आर यूजिंग स्पेक्स, देन इन प्रीलिम्स as well as in mains as well as in interview you must use this spec. देखिए नीचे का फोटोग्राफ नहीं है, the dress can be changed, that is not an issue, but this face this is important, right? If
I have taken a photograph without my specs, then in examination I have to go like this. But if I have taken a photograph with these specs, then I have to wear these specs in the all three phases of exam. Prelims में भी, mains में भी, interview में भी. तो आप ऐसे जा रहे हैं, तो फिर interview में भी आपको ऐसे जाना है और mains में भी ऐसे ही जाना है, so that examiner can very well judge by looking your photograph, looking your face, they can match. ऐसा देखा है, लोग पुराना फोटो यूज कर लेते थे, 3 साल पुराना, उस समय बच्चे थे आप, और आप अब दाढ़ी वाड़ी रख करके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और एग्जामिनर पहचान नहीं पा रहा है. सो दिस इज बीइंग अमेंडेड दिस ईयर. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड दिस ईयर. तो एक तो ये टोटल फोटोग्राफ में से जो आपका फेस पोर्शन है ये 3/4 होना चाहिए, एंड दिस कैन बी 1/4 प्लस इसमें नेम और साथ में ये मेंशन होना चाहिए डेट ऑफ द फोटोग्राफ. दिस हैज टू बी डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट दिस इज न्यू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. वन इज फॉर ओबीसी एंड सेकेंड इज फॉर ईडब्ल्यूएस. तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस के लिए, एज आई टोल्ड लास्ट ईयर वी हैव सीन not only rank 105 but the other candidates also, few other candidates also faced this difficulty. तो ignore नहीं करना है बेटा. You have to be very cautious and read this carefully, instruction given in the notification, or what I am telling you, listen carefully here, that it is important. Now for OBC non-creamy layer candidates, certificates should be based on, your OBC certificate should be based on the income of previous 3 financial year. What are those financial year? 22-23, 21-22, 20-21. You are applying for CSE 2024. So these 3 financial year income, on this basis the OBC certificate will be issued by the concerned authority. What does it says? अगर आप अगले साल फॉर्म भरेंगे 2025 में, then instead of this new year will be added 23-24. So past 3, मतलब latest 3 financial years, the criteria is that if you are a OBC candidate, then average income of last 3 financial year of your parents, parents में कौन कौन है, mother plus father both, of your parent should be less than 8 lakhs per annum. That is average. And OBC certificate is on the basis of income and caste. So your caste must be mentioned in the list of central government that is given by UPSC, and your income of your parents, the joint income of your parents from all sources. Income का मतलब होता है, it can be earning from agriculture, earning from rental, earning from job, earning from any business club together. It is income, it is not profit. So this is income. Income of your parents should not be more than 8 lakh. It means should be less than 8 lakh. Right. So certificate must be issued before the date of closing date of application form. And what is closing? ये important है, सबसे important point ये है कि आपका सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट कब बना होना चाहिए? Closing date of filling the form and last date of filling the form, closing date of filling the form, that is same, that is 5th of March. तो 5 मार्च के पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए. Dear friends, if in prelims you have to just tick that you are from OBC or EWS or any category, you don't need to submit this certificate, but you will be required to have this certificate. और आपको ये सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना पड़ता है कि what is this certificate. So it means, practically it means कि before you fill the form, your certificate is in your hand. Please notice this. Before you fill the form, certificate is in your hand. क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना पड़ेगा. अगर आपका सर्टिफिकेट इस डेट के बाद का होगा, इफ इट इज इश्यूड आफ्टर 5th March 2024, चाहे वो 6th March भले ही क्यों ना हो, 10th March क्यों ना हो,
it is invalid. तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो इसके पहले का होना चाहिए। प्लस इतना भी पुराना नहीं हो सकता कि उसमें ये फाइनेंशियल ईयर ना आ रहा हो। इट मीन्स यू हैव ए सर्टेन विंडो। व्हाट इज दैट विंडो? यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट बिटवीन 1st April 2023 to 5th March 2024. Your certificate should be issued between these dates. अब आपके पास अगर इससे पुराना सर्टिफिकेट है, अनवैलिड है। अगर इससे उस सर्टिफिकेट में अगर ये फाइनेंशियल ईयर नहीं आ रहे हैं तो भी इनवैलिड है। इसलिए इंश्योर करिए कि योर सर्टिफिकेट हैज द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फाइनेंशियल ईयर एंड इज इशूड बिटवीन अप्रैल टू 5th March। ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट है बिफोर दिस, यूजलेस है। इफ योर डॉक्यूमेंट इज कमिंग आफ्टर दिस, useless. If the document is not issued by competent authority, useless. If the document is not in the prescribed format of UPSC, useless. UPSC is very transparent, very transparent, but they are very strict. Even if you appeal to court, go high court, Supreme Court, nothing will happen. There are well set examples of the past. तो इसको ध्यान करना है क्योंकि इस तरह की मिस्टेक्स हर बार होती हैं। Every year we observe certain students have made this mistake. They uploaded old documents or they just tick marked OBC, but they could not have the certificate. Later they felt problem. तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। Next is, इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं कि what it says कि average income, as I told, the average gross income of parents should be less than 8 lakhs per annum of the last 3 financial year. इसका मतलब यह है कि if in this financial year income is X, this is Y, here income is Z, then your average income of your parents X plus Y plus Z by 3, this should be less than 8 lakh. किसी फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा हो सकती है, this may be more than 8, this may be less than 8, this may be less than 8, but if overall is less than 8, valid, no problem. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि द लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज हु कैन इश्यू दिस डॉक्यूमेंट। यूपीएससी में हर चीज फॉर्मेट है, तो कौन से वो ऑफिसर हैं जो ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। नाउअडेज एप्लीकेशंस आर ऑनलाइन। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट आपको लेना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो एनी विंडो टू गिव यू एंट्री इन ओल्ड डेट। इसलिए आप सोचते हैं अगर कि अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या कोई बात नहीं, बाद में बनवा लेंगे पुराना, नहीं बनेगा, बिकॉज नो अथॉरिटी विल इश्यू द सर्टिफिकेट इन बैक डेट बिकॉज एवरी एप्लीकेशन इज नाउ ऑनलाइन। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन इशू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम कैन इशू, कलेक्टर कैन इशू, डिप्टी कमिश्नर कैन इशू, डीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैन इशू, डिप्टी कलेक्टर कैन इशू, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैन इशू, सब डिविजनल एसडीएम कैन इशू, तालुका मजिस्ट्रेट कैन इशू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन इशू, और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर कैन इशू। ये कोई भी दीज वुड बी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फिर आगे चलते हैं, और कौन इशू कर सकता है? चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर में होते हैं जैसे तहसीलदार और एबव, दे कैन ओनली इशू, मतलब तहसीलदार से नीचे का नहीं, बीडीओ वाला नहीं चलेगा, नायब तहसीलदार वाला डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। So it should be made by तहसीलदार और SDM और DM और डिप्टी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट and so on. Please remember this. Then further, sub divisional officer SDO of the area can also issue. Right. तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली तहसीलदार या SDM से बनता है, तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं। राइट। Then secretary of the administrator, development officer, ये सब इशू कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कॉमन।
अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी। जो कंडीशन ओबीसी के लिए थी, मोर और लेस सिमिलर कंडीशन इज फॉर EWS. So income and caste, that was the criteria for OBC, and income and asset, this is the criteria for EWS. तो asset is important, income is important, ये दो criteria होते हैं. Now asset and income. So the candidate says candidates should be prepared, documents should be prepared, documents should be prepared before the closing date of the form. Same criteria like in OBC, कि before you fill your form, your EWS certificate is in your hand. Please remember this. This document should not be older than the 5th of March. उसके बाद का नहीं चाहिए, right? 5th March के बाद का नहीं चाहिए, मतलब 6th March, 7th March, 8th March will not work. It is required for the window. April कब से कब? It is from April 2023 to 5th March 2024. इस बीच में बना होना चाहिए. Your document must be made between this date. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट ईयर वाला डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आपको बनवाना है दोबारा, राइट? सो प्लीज नोटिस दिस. एंड फर्दर आई विल डिलीट दिस. Next is the gross income. The criteria here is different. It is income of the family. Gross income of the family. OBC में क्या था? Gross income of the parents. Here it is gross income of the family. So gross income of the family should be less than 8 lakh. And there are two criteria: income, asset. तो पहले income की बात करते हैं. And this is the income of the previous financial year. इसमें एक ही financial year को लिया गया है. Previous financial year was which one? 22-23. मतलब 1st April 2022 से लेकर के 31st March 2023, इस बीच के जो फाइनेंशियल ईयर था, in this financial year, your income of your family, gross income of your family should not be equal or more 8 lakh. It means should be less than 8 lakh. 8 लाख से कम करना है. बट एक पॉइंट यहां पर नोटिस करने वाला है, फैमिली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? क्योंकि प्रीवियस केस में तो पेरेंटल इनकम था, हियर इट इज अ फैमिली. सो हु इज द फैमिली? फॉर द डेफिनेशन ऑफ दिस, फैमिली मीन्स कैंडिडेट, मतलब यू, योर मदर, योर फादर एंड योर सिबलिंग. सिबलिंग्स कौन? हु आर और हु इज लेस देन और इक्वल टू 18 years ऑफ एज. जो 18 साल से आपके भाई बहन बड़े हैं, उनको सेपरेट फैमिली में ट्रीट कर लिया गया. उनकी इनकम क्लब नहीं होगी. इफ यू आर ऑल्सो वर्किंग इन एनी प्राइवेट, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस where you earn money, it comes in your account, then your income will be added to your parents, and it is a gross income from all sources. Agriculture, business, rental, job, सारे इनकम क्लब करते हैं. तो इनकम मस्ट बी लेस देन 8 lakhs per annum for the previous financial year. ध्यान रखिए. If you are married, then your family will include your spouse, you, your spouse and your children. But if you are unmarried, then you, your parents and your siblings. दोनों में थोड़ा सा अंतर है. मैरिड के लिए spouse, yourself and your children of younger than 18 years. But if you are unmarried, then your mother, your father, yourself and your siblings of less than 18 years of age. तो ये ध्यान रखना है. Further, then we will talk about the next point. EWS कैंडिडेट के लिए इनकम एंड एसेट दोनों होता है, और इनकम में सारी इनकम ऐड हो रही है. एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, सब कुछ ऐड हो रहा है. दूसरा, फैमिली, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस, फैमिली का मतलब है कि फैमिली इंक्लूड्स पर्सन हु सीक्स द रिजर्वेशन, मतलब यू and his or her parents
एंड पेरेंट्स के अलावा फिर सिबलिंग्स बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट, एंड ऑल्सो हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। स्पाउस अगर है तो वो भी ऐड हो जा रहा है यहां पर। थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड इज द प्रॉपर्टी हेल्ड। अब ना इसमें क्या कह रहा है, इनकम एंड एसेट। एसेट में प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली कंसीडर की जाएगी। सो एसेट ऑल्सो इट इज नॉट द एसेट ऑफ फादर, इट इज एसेट ऑफ फैमिली। सो एसेट क्राइटेरिया इज दैट वी हैव टू चेक कि एसेट में सारे फैमिली के एसेट ऐड होंगे। इफ देयर आर इन डिफरेंट सिटीज वो ऐड होंगे, इफ दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स तो भी ऐड होंगे। सो ऑल द एसेट्स विल बी एडेड। तो हम एसेट क्राइटेरिया देखते हैं। तो फैमिली एसेट्स शुड नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, शुड नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, नॉट एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लेस देन 5 दैट इज फाइन, बट 5 और मोर 5 और मोर देन 5 नॉट permitted in EWS. Second, residential flat of 1000 square feet and above नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि less than 1000 square feet का फ्लैट अलाउड है, बट 1000 और मोर अलाउड नहीं है, राइट। थर्ड, प्लॉट, द प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स। देखिए प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड विद इन दी म्यूनिसिपैलिटी, अगर आप सिटी के अंदर म्यूनिसिपल बाउंड्री के अंदर है, देन 100 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट छोटा हो, बट इफ इट इज बियॉन्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देन 200 स्क्वायर यार्ड से छोटा होना चाहिए। तो इफ इट इज बियॉन्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देन द साइज ऑफ द प्लॉट इज 200, तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। दिस शुड नॉट हैव, इट मींस less than 100 within the municipal, less than 200 outside municipal will work। अब समझ गए आप कि EWS में आने का क्राइटेरिया कितना डिफिकल्ट है। अगर वाकई आप EWS हैं तो सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। There is definite advantage of the EWS, not only in cutoff but also in the allocation of department। तो EWS क्राइटेरिया is important, but what is important? सर्टिफिकेट की डेट, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो आपको अभी रखना है। Although you have not to produce today during the application form of prelims, you will be required to produce it during the time of mains। कॉपी उस समय देना पड़ेगी और ओरिजिनल आप लेके जाएंगे during your interview, but this you should have in your possession because you have to mention that number, right? An old document will not be valid. Same authority which was eligible to issue the certificate in OBC, same authorities are here eligible to issue the certificate for EWS। कौन कौन? DM, ADM, right, collector, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, और फर्स्ट क्लास सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, राइट, दे कैन ऑल इशू। फर्दर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, additional chief presidency magistrate and presidency magistrate they can issue। then revenue officer but not less than तहसीलदार rank, इससे तहसीलदार और above, not नायब तहसीलदार, तहसीलदार and above can issue। SDM can issue, SDO can issue। so these are the list of the officers who can issue। now जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है या OBC का जो सर्टिफिकेट है, in that case the certificates are to be in prescribed format and UPSC की वेबसाइट में prescribed format दे रखा है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो prescribed format it is given in UPSC, इस फॉर्मेट में आपको लेके रखना है। दोस्तों अगर अभी नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट, अभी टाइम है, it takes hardly 10 days or 5 days to get it because last date is 5th of March and do not wait for last day। लास्ट डे में भी शाम 6 बजे का टाइम है, 12 बजे रात का नहीं है। इट इज 6 PM, नॉट 12 PM एंड नॉट 24 hours मीन्स एट 11:59, नो, इट इज 6 PM। प्लस ध्यान रखिए कि सर्टिफिकेट इज इन योर पोजेशन,
आप कहीं इस इंप्रेशन में मत रखना कि पापा जी बनवा लेंगे काम चल जाएगा, वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी सीरियल नंबर या सीक्वेंस नंबर आपको इसमें देना पड़ सकता है। अब एग्जामिनेशन, लेट अस टॉक अबाउट SC ST PWD, व्हाट अबाउट देयर सर्टिफिकेट? देन SC and ST certificates are based on simply caste. There is no any income criteria. अगर इनकम क्राइटेरिया नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, बट बिफोर यू फिल योर फॉर्म सर्टिफिकेट शुड बी इन योर हैंड. सो ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स other than general, all category students, they need to have certificate at the time of filling the form. Please get your certificate well in advance. Although for SC ST financial year is not a criteria, but you should have a certificate today when you are going to tick mark that you are from SC or ST category, right? So that is important. Stage 1 preliminary examination, plan of examination is same like last year. ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको, so that it is helpful to you. Otherwise important information I already have shared, but cut off will be important to know. Preliminary examination is objective type, pre, mains, interview, 3 stages, same like last year. 2 papers of prelims, both 2 hours, right? Both the papers are multiple choice questions in the prelims. There is negative marking in both. First paper consists of general studies, second paper consists of the CSET, and in GS there are 100 questions, whereas in CSET paper there are 80 questions. CSET is a qualifying and that qualifying marks are 33%. हर कैटेगरी के लिए 33 है, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, for every category the qualifying score is 33% in CSET. So second paper is consisting of CSET. CSET has 80 questions, so every question is 2.5 marks, and GS is 100 questions, so every question is of 2 marks. ये क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डिसाइड होता है GS से. नेक्स्ट, मेन एग्जामिनेशन, व्हेन यू क्लियर द प्रीलिम्स, जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको फिर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1. एंड दिस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 इज एड ऑन इंफॉर्मेशन टू योर प्रीवियस फॉर्म, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो बेसिक इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू विल सबमिट, ऑप्शनल से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, जॉब प्रोफाइल है, दोज थिंग्स यू विल फिल एक्स्ट्रा. इन दिस there are 2 qualifying papers, right? Qualifying papers, there are 2 qualifying papers, and these are paper A of Indian language and paper B of English. ये qualifying है, but यहाँ पर qualifying कितना है? 25%, जबकि CSET में था 33%. So any of the 22 languages which are mentioned in the 8th schedule of Constitution, out of 22 languages which are mentioned in 8th schedule of Constitution, you have to choose any one language, Hindi, Marathi, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, any language of your choice. You have to qualify with 25% marks. Subjective questions. All the questions in the mains are subjective, whereas English is common and compulsory for everyone, again 25% marks. These 2 are qualifying papers, इनके marks add नहीं होते. Next stage, papers to be counted for merit in mains. तो mains में जो merit होगी 2007 papers, we will talk about this. This is second category. तो essay, that is 1, essay paper, that is 1. Then GS has 4 papers, so 1000 marks of GS, 250 marks of the essay, and optional. There are 2 papers in the optional, so 500 marks of the optional. If you add all these 3, it is equivalent to 1750 marks. This is 1750 marks. Now the cutoff will be 1750. There is list of 26 optional subjects, but within the literature, out of 26, 1 is literature, and within the literature there are many other subjects. You have to choose one subject, it is of your choice. Next stage, third stage is personality test, which we call interview, and this is of 275 marks.
So before your interview you will fill one more form which is known as DAF2, detailed application form number 2. Why? You have to give more information, which cadre, which department or which service you want to prefer. So your preference order, service preference order, cadre preference order, hobbies, extracurricular activities, achievements, sports, and so on. So more information which will be used for interview. During the time of interview, this information will be useful. So final result will be based on marks of main examination and marks of interview. So main was 1750, interview was 275. इसका मतलब फाइनल मेरिट कितना होगी 2025 में से बनेगी. So the cutoff will be decided from 2025. Result has not been declared. Exact cutoff is not known. There are predictions, but exact cutoff is not known. But here we can see what was exact cutoff of the two prelims, mains, and interview, means final, in last 2 years. So first talk about the 2022. This is 2022, right? तो इसमें अगर हम देखते हैं 2022 में, तो जनरल कट ऑफ वाज 88.22, whereas before that it was 87. This is out of 200. This is out of 200 में से है. So this is around 44%. EWS 82.83, OBC 87.54, SC 74, ST 69. ST is 69. Right. So this is the cutoff of the 2022 prelims. ये है 2021 prelims. थोड़ा सा बढ़ा है. A small marginal improvement can be seen. But notice EWS cutoff is less than EWS cutoff. Here it is. You can see that EWS cutoff is less than the OBC cutoff. Prelims में EWS cutoff is less than OBC cutoff. We have talked about in brief. Dear friends, please take care of filling your form. Do not make mistake and don't wait for the last moment to fill the form. Your center allotment will be on the basis of first fill, first allotment. 3 जगह प्रिकॉशन लेना है. एक तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की डेट, फॉर्मेट और ऑफिसर के डेजिग्नेशन. दूसरा, uploading your photograph, recent one, in the same format in which you would like to appear in the examination. आपको इंटरव्यू देने भी जाना है तो ये मत सोचना कि दाढ़ी रख के चले जाते हैं प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में दाढ़ी काट के चले जाएंगे, सेविंग करके चले जाएंगे. तो फिर इसलिए फोटोग्राफ सोच समझ के डालिए. इंटरव्यू में परमिटेड होता है, आप बियर्ड जा सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट यू हैव टू सी कि विच इज बेस्ट फॉर यू. So I hope that this information will help you. Wish you all the best, and if you want any support from Next IAS, you are most welcome. दोस्तों, for the information I would like to share that we have started recently 2 different series. One series is Beyond the Classroom. Beyond Classroom is a weekly discussion on certain current topic with respect to UPSC examination requirement by the experts. Who are the experts? The Next IAS teachers, experienced teachers who are teaching in the classes, and also sometime we will invite the expert of that field. Second is Prelims Strategy series. So in that series we are talking subject wise discussion with the concerned teachers. So do not forget to come live at 9 p.m. in our Prelims test series or in Prelims series of strategy or Beyond Classroom. All the best. Jai Hind.